Hello kids, I welcome you all to this part 4 of the series What Do We Say to It in English. And friends, in this series we are discussing about some of the Hindi words about which we are very familiar but we don't know their English translation. So why to wait? Let's get started. So in our day-to-day life, we experience many tastes. Yes friends, we eat many things. हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिनके अलग अलग स्वाद होते हैं. So आज की हमारी इस वीडियो का जो थीम है वो यही है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं. राइट? सो सबसे पहला हमारा वर्ड है दैट इज स्वाद. सो स्वाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट. दैट इज टेस्ट. नाउ वी ईट करेला. वी ईट करेला. उसका टेस्ट कैसा होता है? दैट इज कड़वा. इट्स कड़वा. एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर कड़वा इज बिटर. इट्स बिटर. नाउ द थर्ड वर्ड ऑफ द वीडियो इज मीठा. मीठा. एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वीट. नाउ द अनदर टेस्ट इज नमकीन. दैट इज Namkeen. So we have two translations for it, that is salty and savory. Savory and salty. And now we have many things with us which do not have any kind of taste. Means वो बिल्कुल फीकी होती हैं. Right? So उस taste को हम English में क्या बोलेंगे? So फीका is bland. It's bland. Now we eat many citric fruits like lemon, oranges. So they taste खट्टा, right? उनका taste होता है खट्टा. So for English word for खट्टा is sour. That is sour. Now the last word of the episode is Tikka. It's Tikka. And in English we translate it as spicy. It's spicy. Now I would like to say to you, thank you for watching the video, and if you like the video, please hit the like button and share your views in the comment box. And if you wanna contact us in a official mode, so you can contact us on studybasiceducation@gmail.com. Thank you.